Well, the TMC has hit back. In fact, Abhishek Banerjee has leveled allegations against the BJP, saying that the BJP has deprived the people of Bengal. বিজেপি নিজের সংকল্প পত্রে বলেছে তারা যদি আবার ক্ষমতায় আসে তাহলে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি করে দেশের সংরক্ষণ ব্যবস্থা তুলে দেবে। আজকে হাইকোর্ট সমস্ত ওবিসি কাস্ট সার্টিফিকেট 2010 এর পর আমাদের সরকার যেগুলো ইস্যু করেছিল সব কাস্ট সার্টিফিকেট বলেছে বাতিল হয়ে যাবে। Adrija is joining us with more details. Adrija, Abhishek Banerjee, they're hitting back at the BJP, saying that they've denied people their rights. They've deprived them of it. Well, absolutely. You see Abhishek Banerjee, the TMC party, hitting out at the BJP, saying that this entire order was manipulated and in fact drafted by the BJP. And what Mamata Banerjee, the Supremo of TMC, have come out and have mentioned that there are certain judges in the Calcutta High Court who favor the Saffron party, and therefore, they give orders to malign the present state government, the TMC government, and to ensure that the BJP gets an undue advantages of this. And this is nothing but yet another order of the same manner. And what Mamata Banerjee, the TMC, have been claiming that they will be now challenging this entire order that has come from Calcutta High Court in the higher court, that is in the Supreme Court. And to ensure, Mamata Banerjee has also brought out the example of the SSC job scam, where almost 26,000 jobs were cancelled by an order of Calcutta High Court, but they have later challenged the same in Supreme Court. Right. Also, we have a reaction coming in from Chairman of NCBC Commission. Adrija, thank you for getting us the details. Now, last year, the National Commission for Backward Castes highlighted that out of 179 OBC groups in Bengal state list, 118 belongs to the Muslim community. Hansraj Ahir, chairman of the NCBC, alleged in the past that Bangladeshi immigrants and Rohingyas were included in Bengal's OBC list. He spoke to us on the Calcutta High Court order. Listen in. 2023 में मैं एज ए चेयरपर्सन नेशनल ओबीसी कमीशन के रूप में मैंने मीटिंग ली थी। तब मैंने देखा कि 2010 तक 11 के पहले बंगाल में 108 जातियां ओबीसी में आती थी, लेकिन 2011 के बाद वो जातियां बढ़कर 71 जातियां उसमें बढ़ गई है। उसमें से 65 जातियां माइनॉरिटी की अर्थात मुस्लिम भाइयों की थी और 6 जातियां हिंदुओं की थी। तो एक साथ में 65 जातियों की वहाँ बढ़ोतरी होने से जहाँ पर 53 जातियाँ मुस्लिम भाइयों की थी वहाँ पे 118 हो गई है। जहाँ हिंदुओं की 55 जातियाँ थी वहाँ 61 जातियाँ हो गई, 61 हो गई है। तो ये अंतर जो है वो अंतर में ही शंका आती है, आशंका आती है, डाउटफुल बन जाता है। इसका स्वागत करता हूँ मैं, सारे ओबीसी जातियाँ स्वागत करेंगी, सारा समाज स्वागत करेगा हाई कोर्ट के निर्णय का। Kane sir, your dinner. On a tile? Arey, it's antibacterial. Scratch resistant also. The plates? Kane bhai, it's a tile ad. IM Plus टेक्नोलॉजी से बने वर्ल्ड क्लास टाइल्स। टाइल हो तो सिंपल हो।